अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ नईम खियानी फ्रॉम द आर्ट ऑफ इन्वेस्टिंग। थैंक यू सो वेरी मच हमारे प्रोग्राम्स को पसंद करने का और देखने का। लास्ट वीक जैसे हमने डिस्कस किया, हमने एक स्टॉक मार्केट ट्रेडर्स नेटवर्किंग नाइट रखी थी, वेंट वेरी वेल। कुछ ग्लिम्स जो है वो आप देख रहे होंगे व्हाइल आई एम स्पीकिंग। इसमें हमने ट्राई किया कि जितने बिगिनर्स, प्रोफेशनल्स और एमेच्योर स्टॉक मार्केट के ट्रेडर्स हैं उनको हम एक जगह जमा करें, and then we discussed different topics, right? Such as हमने डिस्कस किया साइकोलॉजी, स्टॉक ट्रेडिंग की साइकोलॉजी क्या होनी चाहिए, कौन सी ऐसी स्ट्रैटेजीज हैं जो इस इन्वायरमेंट में काम करती हैं। बिगिनर्स के अपने कुछ जो है सवालात थे, दे ब्रॉट दोज क्वेश्चंस, और द गुड पार्ट वाज कि हमारे पास एमेच्योर और प्रोफेशनल्स के लोग भी काफ़ी थे, तो डिफरेंट टेबल्स पे हमने उनको जो है वो एक जगह जमा कर दिया, एंड दे वी एड लॉट ऑफ discussions there. So it was a very good session. Inshallah next session हमारा कोशिश करेंगे कि हमारा अप्रैल मई में हो. We'll announce it here, so do visit those sessions as well if you have missed the earlier one. Okay जी, coming back to आज हमारी market summary. गोल्ड ने काफी उतार चढ़ाव हमने देखा गोल्ड में। लास्ट वीक गोल्ड वाज टेक्निकली अप टिल 5600 और उसके बाद गोल्ड ने एक नोज डाइव ली and it came down to around 4700 to 4800. Gold was still struggling to move up, लेकिन अभी आज हम गोल्ड की प्राइस भी चेक करेंगे तो it is still moving up and down. Different speculation गोल्ड के हवाले से हैं कि यूएस ने जो है वो काफ़ी ज़्यादा करेंसी मार्केट में फ्लोट कर दी, जिसकी वजह से गोल्ड जो है वो इम्पैक्ट हुआ। बट गोल्ड इज़ अ ग्लोबल कमोडिटी, राइट? तो उसको इम्पैक्ट होना या आना थोड़ा सा मुश्किल काम है, बट दैट्स व्हाट वी हैव सीन। लेकिन गोल्ड इज गोना गो अप, एंड दैट्स व्हाट मेजॉरिटी ऑफ द एनालिस्ट आर प्रेडिक्टिंग, दैट इवन दो गोल्ड इस वक्त 5000 के मार्क पे चला गया, तो गोल्ड माइट, और इन अप्रैल और मई टाइम फ्रेम गोल्ड मे गो up till 7000 USD, right? So that's what we are seeing, that's what we are predicting. Or similarly, along with gold, silver is taking the hype as well, और इन दोनों commodity की वजह से जो कॉपर है that is going up as well. So that's how the good thing for us to look at as an investor, कि किस तरफ जो है वो रैली ज्यादा जा रही है, so that we can dump our money in and get some profit out of it. Okay जी, so आज का प्रोग्राम हम स्टार्ट करते हैं। पहला है मार्केट समरी, के इस वीक मार्केट समरी क्या रही। अगर आप देखें एआई कैपेक्स का मतलब क्या है कि काफी सारी कंपनीज जो बड़ी टेक कंपनीज हैं, दे आर इन्वेस्टिंग इन एआई अ लॉट, लेकिन उसका आउटकम क्या है? दैट्स व्हाट अ लॉट ऑफ कंपनीज आर नॉट गेटिंग देयर आरओआई व्हाट इट्स सपोज्ड टू गेट, व्हिच इज व्हाई if you are looking at Alphabet and Microsoft, they are being judged on their multi-billion-dollar spending burn on AI, right? And that's what we are seeing. So they are burning a lot of money on AI at this point, but the outcome is not that savvy what we are expecting. Second point is geopolitical premium, and that's exactly what we have seen. और एक न्यूज आई थी कि अगर कनाडा और चाइना का जो है वो बॉन्ड हो जाता है तो यूएस विल impose some tariffs on Canada. उसकी वजह से 100% on China linked goods and 50% on Canadian aircraft. So that's what we will see, a volatility tax. That's a right word, right pronunciation to say, on the TSX. और उसकी वजह से जो डिफेंस रोटेशन है वो थोड़ा सा जो है वो हिलेगा, but that's what we are looking at कि कैसे वो जाएगी कहानी। गोल्ड्स रीसेट मूवमेंट, और यही हमने देखा, और थोड़ी देर पहले हमने गोल्ड के बारे में ही बात की कि हिस्टोरिकल रन टुवर्ड्स 5000 पर आउंस, और इसके बाद वो एक वर्स्ट, दिस इज द वर्स्ट सिंगल डे ड्रॉप जो नोज डाइव हुई थी सिंस अप्रैल 2025, एंड इट्स कैनेडियन हाई सेंसिटिविटी टू द सेफ हेवन ट्रेड। गोल्ड का हमने बात की, मे बी एज आई सेड अर्लियर, गोल्ड मे गो अप टू 7000 USD, but we'll see how exactly it go, but you have to keep an eye on it. Fed tightrope by holding rates steady to 3.5% to 3.75%. यूएस ने भी रेट नहीं बढ़ाए, कनाडा ने भी रेट नहीं बढ़ाए, जिसकी वजह से फेडरल रिजर्व इज एट द वेट एंड सी अप्रोच, क्योंकि यूएस के पास इस वक्त काफी ज्यादा डेट है, राइट? एंड दैट्स एग्जैक्टली, इट्स नॉट राइट फॉर यूएस एट दिस पॉइंट. So they are trying to get something out of it so that their economy start moving up.
सेक्टर डिवर्जेंस, ग्रोथ इज नैरोइंग, सेमीकंडक्टर और सॉफ्टवेयर आर फेसिंग रियलिटी चेक, ये हमने लास्ट वीक भी डिस्कस किया था एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट इट कंटिन्यूड इन दिस वीक. एनर्जी, यूरेनियम एंड कंज्यूमर स्टेपल्स, हमने कंज्यूमर स्टेपल्स भी लास्ट टाइम डिस्कस किया था, आर इमर्जिंग एज अ न्यू लीडर ऑफ इन्वेस्टर. और कोई हद नहीं है कि जो S&P 100 इंडेक्स में आपको जो है वो एनर्जी और कंज्यूमर स्टेपल जो है ज्यादा नजर आना शुरू हो जाए. सो दैट्स व्हाट वी विल सी एज वी गो फर्दर. ऑलराइट जी, यूएस मार्केट दिस वीक, जो लास्ट स्लाइड में हमने डिस्कस किया है द वेरी हाई लेवल, क्या मार्केट का ट्रेंड रहा, हम थोड़ा सा डिटेल में चलते हैं. ओवरऑल मार्केट परफॉर्मेंस क्या रही, S&P एंड Nasdaq प्रेशर्ड में रहे टेक्नोलॉजी की वजह से. डाउ जोन्स हेल्ड अप बेटर ड्यू टू एक्सपोजर टू इंडस्ट्री एंड एनर्जी मार्केट. प्राइमरी ड्राइवर्स यूएस में कौन रहे, अर्निंग्स रियलिटी चेक जिनको मिला वो है सेवरल मेगा कैप टेक कंपनीज डिलीवर्ड मिक्स गाइडेंस, और ये दैट्स एग्जैक्टली वेयर द एआई कम्स इन. Even good earning triggers selling due to high valuation or overcrowd position. So इसकी एग्जांपल हमने देखी Alphabet, इसकी एग्जांपल हमने देखी Amazon, इसकी एग्जांपल हमने देखी डिफरेंट बड़ी टेक कंपनीज जो इस वक्त एआई के ऊपर काम कर रही हैं, गूगल सेल्फ एज वेल. नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटरेस्ट रेट और मैक्रो बैकड्रॉप. और इंटरेस्ट रेट एज आई सेड के होल्ड रहा, हायर फॉर लॉन्गर एक्सपेक्टेशन आर स्टिल एम्बेडेड एंड दिस प्रेशर लॉन्ग ड्यूरेशन ग्रोथ स्टॉक्स. अब इसी तरीके से हमें देखने को मिलेगा कि ये स्टॉक जो है वो ग्रो होना शुरू हो जाएंगे क्योंकि इस वक्त बॉन्ड यील्ड्स और बाकी जो है वो स्टेबल हो गए, तो इन्वेस्टर का पैसा जो है वो दूसरी जगह जाके देखना शुरू हो जाएगा एंड दैट्स व्हाट वी विल सी. सेंटिमेंट शिफ्ट जो हमें नजर आया वो एनर्जी, इंडस्ट्रियल और मटेरियल्स में नजर आया. डिफेंसिंग बाय अपीयर सेलेक्टिवली बट नॉट ब्रॉडली. सो दैट्स व्हाट वी हैव सीन. इस वक्त अगर जो सेफ बेट अगर हम अपने प्रोडिक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, so energy is a safe bet right now. So if you get into energy sector, if you get into energy stocks, these are very safe bet at this point, but of course do your due diligence before you jump in. अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है जो अंडर परफॉर्म किया, दैट इज टेक्नोलॉजी. क्या हुआ, प्रॉफिट टेकिंग अक्रॉस लार्ज कैप टेक, एआई एंथुजियाज्म. यही इस वक्त जो है वो बड़ी कंपनीज के साथ इस वक्त प्रॉब्लम हो रही है कि एआई पे इन्वेस्ट तो कर दें बट what is the outcome, what is the use cases what we are going to get. दूसरा बड़ा इशू एआई का ये भी है कि एआई is all based on data and majority of the companies does not have the clean data, and that's where the challenge starts, because if you don't have clean data you won't be able to do anything on AI, because AI will start giving you wrong results based on the data which you have in the system, and that's exactly what majority of the companies are facing challenges. CapEx intensity, that's what we have discussed. Tech is still a long-term leader, but short-term leadership weakened, and that's exactly what we have seen, AI and other things as well. Energy ने outperform किया है, oil prices stayed supported. अभी हम देखेंगे oil prices को और बेहतर होता हुआ, और मार्केट मैसेज ये है कि एनर्जी अर्निंग्स प्रोवाइड कर रहा है मार्केट में, और इवन दो ये एक अनसर्टेन मार्केट है, एनर्जी इज स्टिल परफॉर्मिंग वेल. टोरंटो मार्केट में क्या हुआ, TSX अंडर परफॉर्म्ड यूएस मार्केट, और दैट्स व्हाट वी हैव सीन. एनर्जी अगेन लिमिटेड टू द डाउनसाइड, और कनाडा इज मोर एक्सपोज्ड टू कमोडिटीज एंड ग्लोबल साइकिल्स. स्पिल ओवर फ्रॉम यूएस टेक, यूएस की वजह से हमारे पास क्या इम्पैक्ट आया. कैनेडियन स्टॉक्स आर वेरी स्मॉलर, लेस लिक्विड एंड हायर बेटा रेट, और इसकी वीकनेस की वजह से जो इनफैक्ट टेक्नोलॉजी और टेक कंपनी की वीकनेस की वजह से वी हैव गॉट सम ट्रबल इन द TSX एज वेल. अच्छा जी, सेक्टर बाय सेक्टर अगर हम देखें तो टेक्नोलॉजी मेजर लैगर्ड, रेड है इस वक्त, शार्पली वीक डिक्लाइन, और दैट्स व्हाट वी हैव सीन. नो डोमेस्टिक कैटलिस्ट टू ऑफसेट ग्लोबल सेलिंग, क्योंकि हमारे पास कोई डोमेस्टिक जो है वो टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोडक्ट नहीं है या टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी नहीं है जो उसको चला सके. वी आर हेविली रिलाई ऑन द यूएस कंपनीज. मटीरियल, प्रीशियस मेटल कूल्ड, investor locks in profit, and that's what we have seen. Energy, top performer not only in the US but in Canada as well. Financials, जो bank stable are uninspiring. On the other side, क्योंकि interest rate ज़्यादा जो है वो interest rate move नहीं हुआ है, तो now you will see bank stock will be rising. Industrial में modern gain नजर आया है, और infrastructure and transportation names offer stability. तो इंडस्ट्रियल में हम देख रहे हैं कि there are a lot of things being going on from different projects as well, and this is going to be better as we go further. अच्छा जी, कंपेरेटिव अगर इनसाइड हम देखें, थीम क्या है, मार्केट ड्राइवर कौन है, कमोडिटीज कनाडा में, यूनाइटेड स्टेट्स में है अर्निंग्स एंड वैल्यूएशन. वीक सेक्टर टेक्नोलॉजी दोनों जगह रहा है,
स्ट्रॉन्ग सेक्टर एनर्जी इंडस्ट्रियल यूनाइटेड स्टेट्स में और कनाडा में सिर्फ एनर्जी रहा है। रिस्क कहाँ पे है? कॉशियस रोटेशन और डिफेंसिव स्टेबलाइजेशन, दैट्स द रिस्क राइट नाउ। ओके, नाउ अब हम बढ़ते हैं गोल्ड की तरफ। गोल्ड में इस वक्त, और ये मैं आपको लास्ट टाइम भी मैंने आपको इस बारे में जिक्र किया था कि GLD एक ऐसा टिकर है जो गोल्ड की प्राइस से प्रोपोर्शनली चलता है। अगर इसको आप एक 5 दिन का देखें, राइट, सो इस वक्त क्योंकि गोल्ड नीचे आया है, सो यू कैन सी द प्राइस टेक्निकली केम डाउन। अगर एक मंथ का देखें यहाँ पे, तो गोल्ड वाज गोइंग अप एंड यू कैन सी द प्राइस टेक्निकली टच्ड 495, right, and right now the price is 441, so that's the drop which happens। अच्छा जी, ETF गोल्ड का देख लेते हैं। गोल्ड का ETF जो है इस वक्त है 55.13 पे। यू कैन सी द कर्व जो कि नीचे जा रहा है, दैट्स एग्जैक्टली बिकॉज दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the gold price। You can see it's all red, it's going up and down। एक मंथ का अगर हम देखें तो that's how you can see a spike up and then it's coming down। So जो spike up गया था that was up till $66.10 और ये इस वक्त है $55 पे। इसको वॉच करते रहे, जैसे जैसे गोल्ड के प्राइस नीचे जाएंगे this will go down, जैसे गोल्ड के प्राइस अप जाएंगे this will go up। So this is the best way for you to earn money if you cannot afford physical gold or if you cannot afford to buy gold products। So this is the best way to get into। So this was it folks, thank you so very much for watching the art of investing with Naeem Khiyani। इंशाल्लाह हम जो है कोशिश करेंगे कि आपको और चीज़ें बताते रहें। बाय द टाइम ये प्रोग्राम रन होगा, रमज़ान जो है वो आने वाला होगा। सो रमज़ान की आपको बहुत बहुत मुबारकबाद एंड कीप इन्वेस्टिंग, मेक प्रॉफिट्स। Thank you so very much, see you inshallah in the next episode।